Hello everyone and welcome back to another video of CUET with Skylight's Economics Important MCQs Practice Series. आज के 10 क्वेश्चंस होंगे आपके चैप्टर एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से फ्रॉम योर इंडियन इकोनॉमी बुक। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन इज द थ्रेट टू इंडियाज एनवायरनमेंट इज। तो इंडिया के एनवायरनमेंट को किस से थ्रेट है? पॉवर्टी, पॉपुलेशन, पॉल्यूशन, ऑल ऑफ दीज। पॉवर्टी से भी है, पॉपुलेशन से भी है, पॉल्यूशन से भी है, इसीलिए अवर राइट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड्स टोटल आयरन ओर रिजर्व्स अकाउंटेड बाय इंडिया आर नियरली 10%, 8%, 30%, 18%. The right answer is 8%. 8% of world's iron ore reserves are accounted by India. Oh, next question. The per capita forest land in the country is only, तो per capita forest land इंडिया में कितनी है? 0.06 हेक्टेयर, 0.07 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर and 0.09 हेक्टेयर. So the right answer is A option, that is 0.06 hectare. Next question. Estimates of soil erosion show that soil is being eroded at a rate of at a rate of dash billion tons a year in excess of the recharge capacity. So soil erosion meaning removal of upper layer of fertile soil by some agents like flowing water, winds, etc. ठीक है, तो ये एस्टिमेट्स हमें दिखाते हैं कि इस टाइम हमारी एक साल में कितनी सॉइल, किस स्पीड पे सॉइल इरोड हो रही है। तो ऑप्शंस आर 5.3 बिलियन टन्स, 3.5 बिलियन टन्स, 4.3 बिलियन टन्स और 2.5 बिलियन टन्स। तो द आंसर इज 5.3 बिलियन टन्स की स्पीड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, the Chipko movement which aimed at protecting forest started in, तो चिपको movement it was started in उत्तराखंड in year 1973, जिसमें ट्रीज को बचाने के लिए लोगों ने ट्रीज को हक किया, ठीक है, और कितने हजारों ट्रीज को गिरने से, कटने से बचाया, ठीक है। तो ऑप्शंस आ हिमालयाज, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र। तो हिमालयाज, क्योंकि उत्तराखंड में ये चीज हुई थी, ठीक है, तो हिमालयाज इज द राइट आंसर। Next question. In Karnataka, dash movement took place, which means to hug the trees. तो यहाँ पे ये भी ट्रीज को हक करने से रिलेटेड है। तो देर आर टू मेन मूवमेंट्स जिनकी हम बात यहाँ पे करते हैं, चिपको मूवमेंट, एपिको मूवमेंट। चिपको मूवमेंट एंड एपिको मूवमेंट दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था, ट्रीज को बचाना। तो जो विलेजर्स थे उन्होंने ट्रीज को हक किया और उनको गिरने से बचाया। तब तक हक ये रखा कि एटलीस्ट जब तक उनको जो ये ऑफिशियल्स हैं उन्होंने एश्योरेंस नहीं दिया कि अब ट्रीज को नहीं काटा या नहीं गिराया जाएगा, डिफॉरेस्टेशन अब नहीं होगी। तो ये जो मूवमेंट है एपिको मूवमेंट, कर्नाटका में जो मूवमेंट हुई थी वो थी एपिको मूवमेंट, दैट इज बी ऑप्शन। जबकि जो चिपको मूवमेंट है वो उत्तराखंड में हुई थी, ठीक है, वो उत्तराखंड में हुई थी, दैट इज इन हिमालयस। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा। This chain movement is nothing but the tree movement is nothing. The dash movement took place. तो कौन सी? Epico movement in Karnataka, which means to hug the trees. Clear? Okay. Next question. Sorry. Epico movement was started in. तो देखिए जो चिपको मूवमेंट थी, चिपको movement was started in 1973, and after 10 years. In 1983 of September of 1983 ये हुआ था एपिको मूवमेंट, राइट। तो एपिको मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन 8 September 1983, 8 October 1983, 8 November, 8 December. तो these all options are excluded because right answer is 8 September 1983. Next question. CPCB, that is Central Pollution Control Board, was set up in 1954, 64, 74, 84. The answer is 1974, C option. Next question.
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लुक्स आफ्टर मेनली, तो ये जो सीपीसीबी है जो 1974 में सेटअप किया गया था, ये मेन इन्वायरमेंट कंसर्न्स जो है हमारे पॉल्यूशन के, एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन, उनकी तरफ देखता है। तो देखिए उनका ध्यान रखता है। तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड लुक्स आफ्टर मेनली water pollution, air pollution, noise pollution, both A and B. So water and air are the answer. Noise pollution is not the right answer, is both A and B. Okay. The last question of today's video. The Central Pollution Control Board has identified dash categories of industries which are significant polluters. 12, 17, 13, 15. The answer is 17. तो CPCB ने 17 categories of industries को identify किया है जो main polluters है। तो ये थे आज के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो काइंडली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। अगर आप ऐसे ही और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को स्कैन कीजिए एंड प्रैक्टिस कीजिए, और बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपको हेल्प करेंगे आपके CUET एंड बोर्ड एग्जाम्स दोनों में।